आकृति, अच्छा आपका नाम नहीं आकृति, आपका नाम क्या? भूमिका. हाँ, I'll take time to remember your names, but soon I'll start calling you with your names. धीरे धीरे नाम से याद कर लेंगे. आकृति was here. हाँ, वंशिका, कृति, भूमिका, स्तुति, चंदा, अंजलि. हाँ, धीरे धीरे सबके नाम याद हो जाएंगे. ऋषिकेश, 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 ऋषिकेश. तुम्हारा नाम तो वैसे भी नहीं भूलूंगा. हाँ, दिल्ली में कोई ऐसा है ही नहीं जो वीकेंड पे ऋषिकेश जाने का ना सोचे. सो कुछ भी, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी, एनीथिंग? ऑल क्लियर? ठीक है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज फर्स्ट 4 यूनिट्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर यूनिट्स. We talked about this also, English in India. We talked about language, right? The next thing that we're going to deal with, culture studies. It's an introduction. Today, I'll give you the complete introduction of the syllabus. Tomorrow, we will have chronology of British history. We'll discuss the chronology. Monday, I'll start teaching you from 0 level. Monday se classes start ho jayengi. Actually, you will make notes, write down things, and then we will also have reasons to go for rapid fire and conduct test. So आज भी syllabus introduction जरूरी है, because students syllabus को कितना समझते हैं, culture studies उन्होंने कहाँ पढ़ी, कितना पढ़ा है, that is very important to understand. Normally culture studies are not taught in universities. It is either in JNU, DU or in some top universities. हाँ, professors sometimes they introduce these things to students, but normally students are clueless about culture studies. See, in 1964, they formed a group and they opened some kind of, particular center in the university, which is called Center for Contemporary Culture Studies, CCS, 1964. Also called Birmingham School, University में, ठीक है? Basics है, 1964 में लिख सकते हो आप. The first department for culture studies was opened in 1964. The first department of culture studies was opened in 1964. CCCS. CCCS. 1964. You can write the full form also. The full form has been asked. Center for Contemporary Cultural Studies. हाँ, Center for Contemporary Cultural Studies. Center for Contemporary Cultural Studies. It is actually a question, what is the full form? So they'll give you the options, and in one option it will be Contemporary Center of Culture Studies, Center of Contemporary Culture Studies, Cultural Center of Contemporary Studies. So you have to find out the right answer. So CCCS 1964, also called Birmingham School. Birmingham is a place in London. The Birmingham Palace, वो भी आपको पता होगा, क्वीन का घर. अब तो क्वीन नहीं है, अब तो किंग है ना? Queen is dead. That's what Thomas Gray said. All paths of glory, all beauty leads us but to the grave. चाहे कोई किंग हो, क्वीन हो, जाना एक ही जगह है. How many of you know about existential philosophy? Existentialism. What is that? Great. कहाँ पढ़ा? एमए कहाँ से किया आपने? LPU से. अच्छा, ग्रेट. तो LPU इज दैट लखनऊ प्राइवेट, ऐसा कुछ वाला. एक और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कोई एग्जिस्टेंशियल कैसे हो सकता है? ये तो जेन्यू लेवल की चीज है. इट्स लाइक यू गो टू अ मॉल एंड मॉल टेल्स यू इट्स ऑल फेक. ये सब मिथ्या है, इनके चक्कर में मत पड़ो. ऐसा होता है. मॉल में जाओ और मॉल में तुम्हें समझ में इट्स ऑल मेटलिस्टिक. एलपीयू क्या है? ये मॉल है. ये एमिटी क्या है? मॉल्स हैं. अमीरों के स्कूल है, अमीरों की यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्मों में दिखाते हैं. रियलिटी वाले कॉलेज ऐसे होते हैं कि आप गेट के बाहर खड़े होकर पूछोगे कॉलेज कहाँ है. दिस हैपेंड टू मी इन बीकानेर यूनिवर्सिटी. आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी कैंपस. माय ऑटो वाला ड्रॉप्ड मी देयर एंड आई एम सेइंग वेयर इज यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो सेड इसके अंदर चले जाओ. बेचारे जो राजस्थान के बच्चे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ किशनगढ़, बस स्टैंड नहीं था वहां पे.
My sister was in the first batch of Central University of Kishangarh. So they used to, stop at some particular place. They would call. फिर उनके हॉस्टल से कोई भैया वगैरह गाड़ी वगैरह लेके आते थे, and then these girls would go to their hostels. ऐसा था वहाँ पे. That's the reality. But still, great. So existential philosophy is simple, that the basic philosophy of existentialism is that we are aliens, casted in an alien universe with no inherent truth at all. कुछ सच नहीं है, सब फेक है, सब मिथ्या है. ये दुनिया पित्तल दी, याद है ना? तो फिर then why do we have culture? Because it is also mentioned in Gita, Quran Sharif, Guru Granth Sahib, Bible, all great books, all religious books, all holy books. All they claim is that God is one and God is the only reality. Rest, it's all fake. गीता में नहीं बोलते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तुमने क्या खोया, जो तुम्हारा गया वो तुम्हारा था ही नहीं. ट्रू. जो आज मेरा है कल किसी और का होगा. Then why are we living together? Why are we developing culture? What's the need? क्या जरूरत है हमें कल्चर की? So they started studying this thing because ultimately you're living together. Cultures are not developed in a planned way. You cannot develop a culture that you had a planning and I want to do it. If you can control cultural practices, it means it's a dead culture. Parents want their kids to be the greatest one. हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बेटा आईएएस, मेरी बेटी आईएएस, मेरा बच्चा डॉक्टर, प्रोफेसर, राइट? बट सबके बच्चे नहीं बनते. क्यों? Why? Because they are not just learning from parents. Outside, college, no knowledge without college. तो बच्चा कहीं भी डायरेक्शन ले लेता है. डॉक्टर्स की फैमिली में बच्चा टीचर बन जाता है, टीचर्स की फैमिली में बच्चा डॉक्टर बन जाता है. Point is, culture cannot be controlled. So they started studying it. What makes culture? What is culture? What are the main concepts of culture? Have you ever wondered about this thing? Yesterday I taught you this thing that when I'm teaching you, I'm not teaching you. I'm teaching myself, my imaginary self. Just like that, जब आप आपस में बात करते हो, you don't talk to the person in front of you. You talk to the person that you have created, imaginary. थोड़ा हाई फाई लग रहा होगा ना? इट्स ओके, इंट्रोडक्शन है, इससे और हाई फाई. अभी तो हम सिमुलेशन में नहीं जा रहे. जब जैसे पापा से जिद करते हैं कि हमें ये खरीदना है, तो वी क्राई, रोना शुरू करते हैं. बच्चे करते हैं ना कई बार, ये चाहिए चाहिए चाहिए. बच्चे को कैसे पता कि मैं इतना ज्यादा रोऊं या इतना कम रोऊं एंड दिस इज इनफ? वो कैसे पता उसे? हाँ, so he knows the person and he creates an understanding, another image, hypothetical image, that if I cry this much, he'll understand, she'll understand. If I cry that much. So वो technically क्या कर रहा है? वो act कर रहा है. But वो किससे बात कर रहा है? वो उसके imaginary creation से बात कर रहा है. That's what Salman Rushdie said. We are all translated men. I can try my best to be a best teacher, to look a best teacher. But I will be observed by you. You have your own interpretations, your own understandings, and you will assume it according to you. So मैं जो भी बोलना चाहूं, तुम उसको अपने अकॉर्डिंग ही समझोगे. You will translate me accordingly, अपने ग्राउंड्स पे. So we are not talking to each other. Actually, हम बात ही नहीं कर रहे हैं दूसरे से. Next 5-6 months, I'll be teaching myself. तो आना समझो ना, कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है. अब इसमें पॉइंट बताओ. So if I'm teaching and I'm not talking to you, you do not talk to each other actually, then how we have formed names, surnames, religion, social practices, then cultural tags. He's from Maharashtra, so we say he's a Marathi. Maybe we'll have some, we regularly have students from Bengal, Bengali, Rajasthani, Haryanvi. How do we use these words to denote some culture? पहले तो हम है ही नहीं कुछ, existential है, फिर भी हमने culture develop किए हैं. तो ये सारे reasons थे. How many of you know post-colonials? नहीं समझ में आया? Post-colonial? देखो क्या हुआ. Okay, let's make it easy, very easy. What's your favorite dish, Vanshika?
खाने में सबसे पसंद क्या है? इडली डोसा. Vanshika loves idli dosa. ठीक है. Now Vanshika is in this area. We get students from Tamil Nadu, Kerala, Gujarat. So बच्चे थोड़े happy नहीं होते हैं यहाँ खाना खा के. अब for 6 months, suppose we force Vanshika to eat Punjabi food. No more idli, no more dosa, Punjabi food. 6 months. And Vanshika, she says, no, I will eat my kind of food. I says, I have a gun. Power structure. So I'm dominant. 6 months, she's not happy, but then she eats. Then as she has to eat idli dosa every day, so she starts exploring that can I mix something in idli dosa? Can I mix chutney and this, that? When 6 months in, she is somewhere comfortable eating that Punjabi food. Okay, like I asked her not to eat idli dosa. Abhi comfortable hai. Maybe she has acclimatized, जैसे हम बोलते हैं, खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है. So now she is totally fine with Punjabi food. After 6 months, I say, okay, Vanshika, it's okay. No more pressure, no more power show. Go, eat your food. She'll not have the same craving, feeling, taste for that idli dosa thing because now her choice has been shifted. So what damage I did to her? I changed her nativity, ethnicity, and I made her like me. So me is Angrez, foreigners, Britishers. She is India. They came, they saw, they conquered, Vini Vidi Vici, and they said, no, you people are tribals, you people are savages, be like us, behave like us, and we are doing it. And then they left us in 1947, and we are not being the same Indian again. That's post-colonial. Yeah. Now tell me this thing. आपने देखा वेडिंग में, शादियों में दूल्हा जो है कोट पैंट पहन के आता है. आजकल थोड़ा इंडो वेस्टर्न चल रहा है. या नेक्स्ट डे वो सूट वूट डाल लेते हैं, कोट पैंट, है ना. कोट पैंट तो शादी का ड्रेस है ही नहीं होता, वो वाला ड्रेस है. टेक्निकली ऑफिशियल वर्क्स के लिए होता है. कोट पैंट शादियों में कैसे चल गया इंडिया में? फॉर्मल्स. आर दे गोइंग फॉर एन इंटरव्यू? शादी है यार, जिसका फायदा वो उठा रहा है. कपड़े का कोई ब्रांड है ना, देयर इज अ ब्रांड, तैयार हो क्या ये, वो एक्चुअली इसको उठा रहा है फायदे को. सही चीज है. कोट पैंट इज नॉट आवर ड्रेस, इट हैज बीन given to us, but they didn't ask us to wear. They never said, no, you Indian, dress up in coat pant. No, in fact, they would beat you. How dare you to look one of us? But that feeling, that emotion, अरे आप तो अंग्रेज हो रहे हो, बाबू साहब लग रहे हो, जेंटलमैन लग रहे हो. हमने कोट पैंट को इज्जत से जोड़ा. कन्वेंशंस, गांव में एक शहर का बाबू कोट पैंट पहन के आता था. कोट पैंट गॉट कनेक्टेड टू रेस्पेक्ट. राजू बन गया जेंटलमैन. फिर वेडिंग्स में आ गया तो सच में जहां पे बहुत कॉस्टली वेडिंग ड्रेसेस अफोर्ड नहीं की जा सकती, वहां कोट पैंट चल जाता है. नॉट बैड, बट ये कल्चरल प्रैक्टिसेस है. नाउ पोस्ट कॉलोनियल फॉल्स अंडर कल्चर स्टडीज. हाउ इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन आवर कल्चर. वी विल स्टडी दिस थिंग. वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ contact zone theory. I'm talking to you, you are learning from me, you have different languages. I am speaking in a common language which can be easily understood by you. But this is not the way I talk to my family members. So I'm coming out of my comfort zone. आप लोग भी अब जैसे कोई हरियाणा से है, उसे अगर हरियाणवी में पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल हो जाएगा. वो उत्तराखंड के स्टाइल में पढ़ाने लग जाऊं, है ना. पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में. इंग्लिश इज नॉट योर लैंग्वेज. It's not your first language. You are also coming out of your comfort zone. And that we call contact zone. सोचा कभी इस तरह से? कभी सोचा सीसीटीवी से आपका जो लाइफ है वो चेंज हो गया है? ये कल्चर स्टडीज की थ्योरीज है. What impact CCTV has? Don't tell me it's very high level thing. ये तो बहुत आम बात है. DUG में तो बहुत बेसिक है. You're here for great level knowledge. मजा आने वाला है. बस मुझे बताओ. You have to be the part of the class. CCTV से जीवन शैली कैसे बदलती है? How CCTV changes your life, controls your life.
You become carefree, careful. सोच के बताओ, carefree or careful? Yesterday only I was having a word with my friend about this. कल रात को बात हुई थी मेरे से. बताओ, carefree or careless or careful? Carefree वंशिका कैसे? You're safe. So you have a camera installed, you can check okay, my safe house is all safe, my car is safe, that's fine. But let's talk about humanity, overall impact on humanity. Carefree, careful. शादी में खाना खा रहे होते हो, कैमरा सामने आता है, क्या होता है? फिर वो उसके सामने अचार ऐसे खाता है खींच खींच के, नहीं खाता. फिर उसके सामने ऐसे उंगली चाट के खाता है, नहीं खाता है. It means you get conscious. Now there are billions of CCTVs installed everywhere and people are learning to be conscious, to behave. You are born free, but now you are being chained, being controlled. This is the power structure. This is controlling you. It looks that it is helping you, but it is also controlling you. Class में students शैतानी करते हैं, it's normal. But the moment we have multiple CCTVs and you get to know that it's live, you will have to sit normal. Soon you will forget how to be a delinquent student in the class. Class में शैतानी कैसे होती है? हमारे टीचर नहीं आते तो हम तो कॉपी से ऐसे एक छोटा सा बॉल से लेके ऐसे टक टक ऐसे करते थे, टेबल टेनिस. अब नहीं करो. ओवरऑल यू आर बीइंग कंट्रोल्ड. दे आर यूजिंग इट इन एडवर्टाइजमेंट आल्सो. ऊपर वाला सब देखता है एंड देन दे आर शोइंग सम सीसीटीवी. दैट इज द पार्ट ऑफ पैनोप्टिकॉन थ्योरी. Jeremy Bentham, a famous writer and a philosopher. Yes, Jeremy Bentham went to meet his brother, and his brother was like some, into construction business. So some construction was going on, and at the center point of the construction area, there was some kind of, watchtower. And his brother was having his chair there. He was sipping coffee, sitting at the top of the watchtower, looking at everyone. Bentham said, why are you doing this thing? You have your luxury office, sit there. Why are you at the top of the watchtower? He says, when I sit here, all these laborers, they work hard, they focus. If I'm not there, they don't work. घर में कंस्ट्रक्शन करवाया कभी? तो मजदूरों के साथ खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो बीड़ी पी के साइड पे. So फिर खड़े होने से क्या होता है? आप सिर्फ वहां पे ऐसे खड़े हो जाओ बस. You are being monitored. So the moment they are being monitored, they'll start doing हाँ कुछ कर रहे हैं. Things happen here, अंकित, यहाँ भी होती है. जैसे हम लोग क्लास में बाहर आते हैं, सब रिलैक्स. जैसे सर मैम या मैनेजर्स आ गए वापस सब काम पे, it happens. घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं. Bentham got this idea that okay, if you're being monitored, your behavior changes. It becomes more controlled, more disciplined. He got this idea and imagined panopticon prison. He said, क्यों ना ऐसी जेल बनाई जाए जहां पे सबको एक साथ देखा जाए. When the students are making noise in the class, B.Ed में आपको पढ़ाया होगा, if you have done B.Ed, टीचर को क्या करना चाहिए? You just start looking at them. चुपचाप make them feel that okay, you're being watched. सर आपको भी देख रहे हैं, सर आपको भी देख रहे हैं, सर आपको भी देख रहे हैं. और जैसे देखें सर देख रहे हैं, सीधा हो जाएंगे. बोलने की जरूरत नहीं. You don't have to tell them to keep mum. Just look, make them feel you're being watched. Normal. This gave him the idea to go for panopticon prison. Now there is a Greek myth, a Greek story. In ancient era, there was a prison guard, and that prison guard was famous for monitoring the prison 24/7. एक गार्ड था जेल में, और वो जो गार्ड था वो हेड गार्ड था, सबसे हेड था, सीनियर मोस्ट. एंड उसकी क्वालिटी क्या थी? वो सोता नहीं था. He would never sleep.
and he would sit at the main gate of the prison, the last final gate. वहां पे बैठा रहता था ऐसे चेयर पे. The prisoners were notorious, so sometimes they would, open the lock of the cell and they would come out, and then stealthily they would walk, crossing different levels, and finally when they would reach at the last gate of the prison to escape, they would see that guard looking at them straight. दूर से देख रहा है. They were like, shh, अरे यार, he's watching. बोलता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था वो. He would not say anything. He would just look. This confidence, looking straight in the eyes of those prisoners who are going to escape. He would not move. He would just. मम्मियां नहीं थी, मम्मियां आंखें दिखा दी हैं, काफी होता ना, सिर्फ आंखें ऐसे करती बड़ी सी, समझ जाते हैं बच्चे. Just like that guard would do. ऐसे देखता था. Prisoners would say, चलो यार वापस चलो, देख रहा है, गोली मार देगा. एक बार फिर prison escape. Again that guard is not sleeping. Again after many months they went for another attempt. That guard is not sleeping. Finally these people, they decided, see, the only obstacle we have is that guard. This time we will kill him. Let's see. मार देंगे उसको. बहुत हो गया यार. अलग अलग स्टेप पे हम लोग क्रॉस करके आते हैं, ये लास्ट में सोता नहीं है. So finally again they tried to escape. Crossed all the levels. When they reached to that guard was still looking at them. They were like, okay, we do not fear you. Let's challenge him. They started walking towards him. He was still staring. They almost came in front of him, still staring. They realized that he's still staring and they just passed from the side. कुछ लोग यहाँ से चले गए, कुछ वहां से चले गए. They all crossed the prison, they escaped. Guard was still staring. He was called next day. King said, man, we are proud of you. What happened? तू तो कभी सोता नहीं था भाई. तो 24/7 CCTV था हमारा. You were CCTV. So when the guard is called, he has no options to do anything, to say anything. He tells the truth. He says, sir, I sleep in the prison. I can't control my sleep. I tried hard to wake up and focus, but it's impossible. I sleep. So finally, I found a way out. I colored my eyelids like open eyes. So even if my eyes are closed, it would look that I'm staring at you. Points. Number one, he was sleeping. But the consciousness, fear of being watched, controlled those prisoners for many years. जबकि वो सो रहा था, technically वो देख ही नहीं रहा था. Even if we have a CCTV, even it is not connected anywhere, it is not working, it will have the same impact unless you are 100% sure it's not working. That control, क्या कर रहा है CCTV? कुछ नहीं. It's controlling human behavior, human nature. Then second learning. It can control human behavior, human nature to a level, to a certain extent. But then, people will resist it. उन्होंने लास्ट में गार्ड्स ने क्या, prisoners ने क्या किया? Then let's see, we will fight. How this thing is controlling. This idea resulted in many panopticon prisons at that time. इजिप्ट में बहुत सारी prisons ऐसी हैं. हरियाणा की जो नारनौल जेल है, वो पेनॉप्टिकॉन प्रिजन है. अंडमान सेल्यूलर जेल, पेनॉप्टिकॉन प्रिजन. दिल्ली तिहाड़ जेल, पेनॉप्टिकॉन प्रिजन. One guard at the watchtower looks at all the cells, and all these cells are shaped like this, that one man can control 40, 50, 60 cells. अकेले देख सकते हो आप क्या कर रहा है. Just like the invigilator in the exam. Invigilator in the exam. The best thing to control cheating in exam is to have CCTV. तो है आजकल हर जगह हो रहे हैं. CCTV लगा लो, एक माइक लगा लो कि अनाउंसमेंट हो जाए. स्टूडेंट्स कोई चीटिंग नहीं करेंगे, पता दिख रहा है CCTV and plus it will be recorded. How it is connected to theory, how it is connected to literature, how it is connected to culture studies, because now we are controlling each other through these things. And when you're talking about CCTV, we are being monitored. कल्चर स्टडी में हम ये सब पढ़ने वाले हैं.
Amazon, Flipkart आपको मॉनिटर कर रहा है. आपके जो routines हैं, they are being monitored. Wondered about this thing ever? Smartwatch, it counts your steps, also counts your regular location. एक ही गार्डन में रनिंग कर रहे हो, पता है उसको कि जिस मॉल में जाना है, जिस कॉफी शॉप में जाना है, उसको सब हिस्ट्री पता है. जिस दिन ट्रैक करना होगा, 1 सेकंड में अरेस्ट हो जाओगे. पावर एजेंसीज हैं. Amazon, Flipkart, Myntra, all they know your likes and dislikes. उन्हें आपकी ड्रेसिंग चॉइस बहुत अच्छे से पता है, कलर चॉइस बहुत अच्छे से पता है. The moment you just open it based on your previous choices, आने लग जाएगा. Why people are not able to go to gym and do the dieting? Because उसको पता है he regularly orders vada pav. I was in Mumbai, so I had great experience of vada pav. So I started loving it. तो पहले खुलते ही वड़ा पाव सामने आता है. You want to resist, नहीं खाना है. उसमें लिखा है great deals. To give you more reasons. You purchase a black dress, Amazon will start showing you black dress. Again and again. You purchase one item, they'll make you buy another item. People who bought this, bought that. Because the world is moving towards consumerism. आप सिर्फ MNCs, पावर स्ट्रक्चर और आप कंज्यूमर्स. इसलिए वो कल्चर स्टडीज प्रमोट कर रही हैं. These MNCs are promoting culture studies. The moment you understand the mindset of your people, targeted people, you will have everything. Coca-Cola प्रमोट हुआ गल्फ कंट्रीज में. अब जब आप गल्फ कंट्रीज में देखोगे तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, normally they have this kind of relation with Western lifestyle, Western culture, that they scorn it. They don't support this kind of life, right? कि ये पेप्सी, कोका-कोला, Western life. हमारे भी पेरेंट्स कहते हैं पेप्सी, कोका-कोला मत पियो. अब आपको ऐसी कंट्री में पेप्सी बेचना है, कोका-कोला बेचना है, जो लोग उसको हेट कर सकते हैं, तो फिर या तो बिजनेस मत करो, या फिर find out some reasons to sell. So they went for hoardings. They went for hoardings. And these hoardings were divided in 3 parts. I'll draw it for you so that you'll understand. Okay, I have the pen with me. Divided in 3 parts. Okay. When I teach you, we'll remove these things. फिर हम प्रॉपर उसको बोर्ड ले लेंगे. अभी तो ये है. एक 3 पार्ट पे होर्डिंग बना दी. There was a person tired, or we can say dead, almost exhausted. Tired, exhausted, dead. Then there was Coca-Cola. He drinks it in the second part of the photo. Third, that same person starts running, healthy, fit and fine. What was the message intended? Yeah. It gives you energy. It's an energy drink. And by midnight, all the streets, all the squares, all the highways were covered with these new energy drinks. भाई ये पिया, इसको पिया तो लाइफ मस्त, एंजॉय. जिंग जिंग आता ना. हाँ, एक और कंपनी भी तो थी जिसमें वो कुछ पी लो तो ऐसे उड़ने लग जाते थे. हाँ, it gives you wings. एक बार पिया था, बहुत बेकार है. हाँ, बहुत बेकार है. उसमें भी उन्होंने स्पेलिंग चेंज किया हुआ है, क्योंकि इसमें इश्यूज है ना, केस हो गया था उस पर. तो विंग्स की स्पेलिंग बहुत अलग है. So that you can't claim anything in consumer court. Wings. तो WIWIN कर दिया. बहुत बड़ा दिमाग होता है इनके पास. Message was, it's an energy drink, you're dead. This is a kind of revital for you. Drink Coke, enjoy, be happy. Not even a single bottle. ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता. If you're selling something and you have the target crowd of millions, 10-20 तो ऐसे होते हैं, they experiment, they try. Youth can try. Let's see what's this.
Not even a single bottle of Coke was sold. The emergency meeting was called. And the emergency meeting, all these people started having discussion, what went wrong, what was wrong. This drink is a huge success in other countries. In Asia, people feel proud while serving Coca-Cola to others. घरों में कोई मेहमान आ जाए उसको आपने पेप्सी पिला दी तो एक इज्जत की बात हो जाती थी. मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है. हम तो खुश हो जाते थे कि कोई अंकल आंटी आए तो आज पेप्सी आने वाली है, हमें भी मिलेगी थोड़ा बहुत. Why not even a single bottle was sold? Anybody? Okay, you know my example. पहले से? हाँ. Great. Yeah, actually मेरा example है. This is Stuart Hall's example. हाँ. This is Stuart Hall is a cultural critic. तो ये उनका example मैंने पढ़ा था. This is how things are passed. मैंने उनका पढ़ा है थोड़ा. I'm just adding some fun factor. बताओ कौन बताएगा? So these people were having serious meetings. They were not able to understand. It was again projected on a big screen. A local person came to serve the coffee, looked at the big screen, smiled, and he said, I know what happened. So all these educated people thought that this office boy, okay, chalo, you take a chance, tell me. He just gave one single line answer. बताइए. He said कि उर्दू को जब हम पढ़ते हैं तो हम backwards पढ़ते हैं. Yes. आपने ये represent करा है कि एक अच्छा खासा person था, उसने कोक पिया वो फिर dead हो गया because it's written. He said we are Gulf countries, Arabian countries. We read from backwards. उर्दू कहाँ से पढ़ी जाती है? आप पढ़ो backwards. हमारी आदत है backwards इस साइड से देखने की. Back to front. बताओ. What's the meaning? Happy, healthy, energetic man drinks Coca-Cola, dies. So this is actually the need why MNCs are promoting culture study. We have to understand culture. The moment you understand the culture, you can sell things. अभी market consumerism में आ गया ना. We are into the extreme capitalism. आपको बेचना आना चाहिए. Why they are selling Cadbury with Diwali thing? कुछ मीठा हो जाए. Are we short of sweets in India? मिठाइयों की कमी है हमारे यहाँ पे. अरे जलेबी की 10-12 आपको वैरायटीज मिल जाएंगी इमरती वगैरह करके. गुलाब जामुन, छोटे गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन, कमी है हमारे पास. फिर कुछ मीठा हो जाए में व्हाई नॉट एनी इंडियन प्रोडक्ट. सोचा कभी ऐसा? चॉकलेट्स रक्षाबंधन पे, इस रक्षाबंधन सिस्टर को दीजिए एक खूबसूरत सा उपहार और बड़ा सा कैडबरी का डब्बा आएगा. और फिर वो पहले वो दुखी होगी. This is how they play with your emotions. She'll be very upset. What kind of Rakshabandhan is this? Then brother will come with surprise. See, ये रहा. And फिर अच्छा चॉकलेट, कुछ नहीं तो चॉकलेट का डब्बा दे दो. कुछ नहीं जल्दी से क्या दे दो. अमिताभ बच्चन घर जा जाके दिवाली में कुछ मीठा हो जाए. इंटरव्यू देने जाना है. वो लड़का आगे नहीं बोलता मेरी मम्मी कहती है इंटरव्यू जाने से पहले मीठा खाना चाहिए तो तुम ये मीठा खा लो. कल्चर से जोड़ रहे हैं, माइथोलॉजी से जोड़ रहे हैं. ये माइथोलॉजी है कि अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड कॉज यू कैन हैव सम शुगर एंड द कर्ड. दही चीनी खा के जाओ. दे आर जस्ट रिप्लेसिंग दही चीनी विद चॉकलेट. In fact, the chocolate day itself is promoted by the MNC. It's a part of culture studies. Have you wondered about this thing? Have you seen the kids playing outside, making their shirts dirty? Then they come and mama is like, कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास है 10 रुपए का व्हील. देखा है? उनमें बच्चे देखना कभी सुंदर से क्यूट से होते हैं कि बेकार से होते हैं? कौन से वाले बच्चे होते हैं? वो वाले मेरे मुंह से निकल गई है वो वाले बच्चे या मॉडर्न वाले क्यूट क्यूट? क्यों दिखाते क्यूट क्यूट? क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. हमारी मम्मी हमें धोती थी शर्ट से पहले, कहा था बाहर मत जा खेलने, सारे काम मैं करूं. If they are showing you fridge, they are showing you some healthy food, juicer, mixer and all these things. They'll show you nuclear family. They are planting this thing in your brain. If they have to show some iodex and move and then they'll show you grandparents. Otherwise नहीं show करते. या फिर a family car जिसमें एक dog होगा, पीछे एक दादाजी बैठे होंगे and they are a happy family. Otherwise 99% advertisements are promoting nuclear family culture. ध्यान से देखना कभी इसको. This is the part of television negotiation. It's a theory.
So we're going to study in culture studies the TV negotiation, how TV is actually controlling your brain. जब इंडिया में टीवी लॉन्च हुआ था, इसे इडियट बॉक्स बोला जाता था. सुना है? बुद्धू बक्सा. पेरेंट्स को पूछना, इनिशियली ये नाम था इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा. टीवी आपको कॉलोनाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है? What makes you buy things? Advertisement. TV is the best place to have advertisements. ये लगा चौका, आ गया 5 मिनट. ये नहीं है तुम्हारे घर में इसका लाइट नहीं है. And they are playing with your emotions. This is all included in culture studies. शादी होने वाली है, उसको लोग रिश्ते में देखने आ रहे हैं. She is looking dull. उसकी बहन आके कहती है ये वाली LED लाइट लगा लो. सस्ता LED है ना? हाँ, बटन दबाती, अरे सब सही है, कमाल है. चलो अगर बटन दबाती सब सही भी है तो उसको लाइफ टाइम साथ रहना है, सारे दिन थोड़ी लाइट ऑन. दे आर प्लेइंग विद इमोशंस. हाउ इट इज कनेक्टेड टू कल्चर स्टडीज? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कल्चर यू अंडरस्टैंड थिंग्स. अगर आपको किसी का कल्चर समझ में आ गया, आप जो चाहे वो उनको बेच दो, वो ले लेंगे. और अब ये कंज्यूमरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं. ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड कल्चर स्टडीज? डू हैव टू डिफाइन इट मोर? एनी क्वेश्चंस? इंट्रोडक्शन है, जब पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा. सब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. विजुअल प्लेजर्स ऑफ नैरेटिव सिनेमा, हाउ वीमेन आर बीइंग पोर्ट्रेड इन सिनेमा, हम ये पढ़ेंगे. द आइडिया ऑफ स्कोपोफिलिया, मेल गेज. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? मैकडोनल्ड इज सेलिंग समोसा. मैकडी के बर्गर सही होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज मुझे भी पसंद है. समोसा देखा? मैकडी समोसा आ तो रहा है, दिल्ली में मिल तो रहा है कई जगह पे, चेक करो. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स नॉट कनेक्टेड टू लिटरेचर? या हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट नो दिस इट इज कनेक्टेड टू लिटरेचर? लगता है आपको ये एक सही चीज है? सोचा कभी ऐसे? सर समोसा पढ़ा रहे हैं, हम तो इतनी दूर से पढ़ने आए हैं, क्या ऑफलाइन में क्या चल रहा है? इट इज कनेक्टेड. McD samosa is an example of, किस चीज का एग्जाम्पल है? ग्लोकलाइजेशन. क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम. व्हाट इज ग्लोकलाइजेशन? देखो, ग्लोबल प्लस लोकल. ग्लोबल प्लस लोकल. मेक अ वर्ड. मिक्स ग्लोबल एंड लोकल. मेक अ वर्ड. कम ऑन. ग्लोकल. GLOCAL. ग्लोकल. ग्लोकलाइजेशन. इसको ग्लोकलाइजेशन कर दो. मैकडी समोसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोकलाइजेशन. अ क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम. इस नेट एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने पब्लिक वीडियो में भी ग्लोकलाइजेशन पढ़ाया है. इट इज अ टर्म. अब ये टर्म बन गया है, नया एड ऑन वर्ड है ये. लोकल को ग्लोबल बना दो. बनारसी साड़ी, कांचीवरम साड़ी, या कोई पर्टिकुलर चीज, कश्मीर का केसर, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर नाउ. या जो पश्मीना शॉल लद्दाख में मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. लोकल थिंग्स नाउ, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, अ ग्लोबल हब. दे आर हैविंग ग्लोबल कस्टमर्स, ग्लोबल पीपल, दे आर बीइंग नोन, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. जलेबी इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. दैट्स ग्लोकलाइजेशन. चटनी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. चटनीफिकेशन एंड चटनी दोनों माना जा रहा है. योगा फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल अलग लेवल पे आ चुका है. हाँ, ग्लोकलाइजेशन. दिस इज ग्लोकल. ग्लोबल लोकलाइजेशन. ग्लोकलाइजेशन पोस्ट कॉलोनियल टर्म है, कल्चर स्टडीज का पार्ट है. अच्छा, कभी ऐसा देखा है आपने किसी को कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस का पार्ट है, somebody is imitating fooding habits? How many of you, let's make it easy. How many of you can eat with fork and spoon? छुरी कांटे से खाना किसको आता है? 1, 2, 3. प्रॉपर ट्रेनिंग किसके पास है? How to keep it, cross, ऐसे. Somebody was trying to teach me. हाँ. If you have a spoon and a fork and you keep it straight, it means you're happy. Food was good. तो उसको बुला नहीं सकते उसको कि भाई और ला दे, ऐसे ओ इधर आ, चम्मच देख. Somebody was trying to teach me, if you like this, if you like this. ये सब की क्यों जरूरत है? God has gifted me
with the tongue. And one sign is like you can keep the spoon straight and the knife, like go for a direction. So why these table manners? Table manners are important. Why? I'm not comfortable with fork and spoon. Seriously, भगवान ने इतने अच्छा हाथ दिए हैं. It's basically not our country, it's not Indian. What if you eat normal rice and dal with fork and spoon? I was attending a session, meditation session. So that taught me this: when you eat your food using your hands, it gives you the sense of touch. You understand your food. Your body gets ready for it. When you're scared, the body releases hormones. When you're happy, the body releases hormones. When you're going to eat, the food is in front of you. You are seeing it, one sense gratified. One ek indri hamari. You smell it, you feel it good. Another sense. Third, touch. Touch is important. That spoon is actually a barrier between the touch. So using a spoon, you just pick the food and you take it in directly. Actually, a proper right method nahi hai. The best thing is use your hands. वो अलग बात है कि तुम 5 स्टार में खाओगे तो लोग ए ओ करके जाएंगे. वो उनका प्रॉब्लम है. You don't have to be ashamed of that. It's okay. But we have one character who was so much, suffering from inferiority that he wanted to be one of those white people. And he eats normal Indian dishes with fork and spoon. Jemu Bhai Patel. Write down this thing. The famous character Jemu Bhai Patel. Jemu, Jemu. Jemu Bhai Patel in Inheritance of Laws. In Inheritance of Laws. Inheritance of Laws. Published 2006. बहुत सारी chronology याद करनी है. Published 2006. Written by Kiran Desai. Famous character Jemu Bhai Patel appears in Inheritance of Laws 2006. Bracket में published or written by Kiran Desai. Is suffering from Anglophilia. Is suffering from Anglophilia. He eats his normal food, normal Indian dishes with fork and spoon. That's the part of culture studies. Representing two cultures, two nations. Got it? The next unit we have is literary criticism that we have to talk about, right? जो next concept था हमारा, next जो unit है, that's literary criticism. Anybody having an experience? Criticism का कोई experience है किसी को? Literary criticism किसने नहीं करा है? करा है थोड़ा बहुत. Plato, Aristotle. वो तो modern है, new criticism. See, so first thing, it starts with Plato, the first teacher. It goes till T.S. Eliot. Starts with Plato, goes till T.S. Eliot. Literary criticism is simple. It deals with the books written, it deals with rules, regulations of arts and aesthetics. A writer, he writes something, that work being evaluated by others, the significance of the work, value of the work if it has an influence on other works, this kind of study or review, these things are actually involved in criticism.
जब प्लेटो आया सबसे पहले फर्स्ट टाइम, प्लेटो केम विद एन आइडिया. He said, see, whatever you write, whatever you try to say, it's all based on an idea. Everything, हर चीज क्या है, एक आइडिया का कॉपी है. जैसे suppose you say, sir, I have written a book. So your book is not your book. It is the copy of that idea that you had. But that idea is not your idea. How did you get that idea? Idea is from surroundings, आसपास से. So he came with this idea that nothing is original. इनका थ्योरी ये था कि कुछ भी सही नहीं है, सब फेक है. You can never have the original creation. Any artist can never claim that my creation is original creation. हो ही नहीं सकता. And in philosophy, because they are philosophers, Plato says it's only the God. It's only the God who can have the idea, the fresh idea. Because for idea also, you need some reference. Idea कैसे आएगा? किसी चीज को देख के आएगा. The world gives you idea, then you write something, do something, paint something, right? The world was created by God in 7 days. दुनिया 7 दिन में बनाई गई थी, according to Christian mythologies. God को कैसे आइडिया आया कि मुझे ये बनाना है? How God decided that okay, I have to make this? God had idea, but God must have seen something to have that idea. So we can say heaven. God must have thought कि चलो जैसे एक स्वर्ग है, एक और बना देते. What if the heaven itself is also built by God? So how God created heaven? क्या आइडिया था? हेवन से पहले क्या आइडिया होगा? So there Plato says that let's assume that God had the first ever original idea, because ideas are also not original. If I'm having my idea of teaching, if I'm having my ideas of using random examples, funny examples, technically my ideas are coming from my social life. So idea is not original, nothing is original. Then God can have the idea. Remember the song, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था. What does that mean? रॉकस्टार फिल्म में गाना है, बड़ा अच्छा गाना है. जब कहीं पे भी कहीं कुछ नहीं था, when there was nothing, it was him. So just like that, God can have that original idea. But then that's a philosophy. In reality, writers, poets, nobody has original idea. They all have ideas which is a first copy, then they write something which is a second copy. So all art, all artistic things, it's all copied. Uske baad, Aristotle and all others, they came one by one. They started talking about a good writer, a bad writer. They started talking about good books, bad books. So I have a question for all of you. What is good literature? What is bad literature? So this concept of high literature and low literature. High literature, low literature, हाँ दोनों हाँ, good. So high literature includes the classics that we need to. नहीं वो तो इट्स इन क्लासिकल सेंस. वो तो आप आर्नोल्ड की बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड. हाई लिटरेचर, लो लिटरेचर. टेल मी गुड और बैड. गुड लिटरेचर क्या होता है, बैड लिटरेचर क्या होता है? It is something that stirs something within you that you just won't forget after reading, and you remember it for a really long time, and you wish to read it again. Okay, And that's okay. Kriti's point is that good literature is something that you read, you get influenced, and you never forget it. वो तो कोई उल्टी सीधी किताब पढ़ लो नहीं भूलोगे. Is it related to Rasa theory? Rasa theory? नहीं, it's not related to Rasa theory. Come with your normal answers. Okay, you don't have to think it's a very complicated question. It's an easy question. Easy questions जो है ना वही फंसाते हैं इंटरव्यूज में. पेपर में टफ क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आसान क्वेश्चन घुमा देगा. गुड लिटरेचर, बैड लिटरेचर क्या होता है? Systematic. Okay, the point to be noted is literature. There is nothing called good literature. There is nothing called bad literature. Remember this point, it depends on an individual. You may have your likes and dislikes. If you come from Asian background, there are so many pornographic books which is bad literature.
तो फैमिली अलाउ नहीं करेगी। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब आप इंग्लिश लिटरेचर चूज करने आते हो, वहां पे अगर आपको कोई बताया ना कि सर हम लेडी चैटरलीज लवर पढ़ाएंगे, फिलिप रॉथ पढ़ाएंगे, फैमिली बोलेगी बेटा क्या, ये नहीं पढ़ना बेटा, ये सब नहीं पढ़ना है। पहले मैं जिसके यहाँ पढ़ाता था ना, वो इतनी गालियां देता था ना इंग्लिश लिटरेचर को, अरे यार तुम लोग ना यही सब पढ़ाते हो उल्टा सीधा, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा सर अंग्रेज पढ़ा रहे हो, क्या करें, अंग्रेज अंग्रेज है, हम तुलसीदास तो पढ़ा नहीं रहे। बट यस, बैड लिटरेचर, गुड लिटरेचर्स आर simply based on your individual opinion, but as a scholar, literature is literature. There is nothing good, there is nothing bad. ठीक है, आपको कभी भी गुड और बैड के बीच में कुछ आंसर नहीं देना है। लिटरेचर इज लिटरेचर। Every coin has two sides. Everything has two sides. We just have to break this myth. Why the hell we have to divide or compare our life with a coin? ऐसा नहीं है कि ए नहीं है तो बी ही है, सी डी ई जो भी होता है वो भी है भाई। Why just to say that okay every coin has another side? No, there are multiple sides. Black, white. It means where are the grays? Gray shades कहां गए? They also exist. This is the problem. The life, the world, the culture, it has been developed in just simple concept, positive, नेगेटिव। कमाल है भैया, और भी तो हो सकता है बीच में, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, 80% पॉजिटिव 20% नेगेटिव। पीपल से डोंट बी नेगेटिव, है ना, बी पॉजिटिव यार, कम ऑन बी पॉजिटिव। बट ड्यूरिंग कोविड बीइंग पॉजिटिव वाज नॉट पॉजिटिव, वहां पे सबको बी नेगेटिव चाहिए था। सी एक्चुअली लाइफ जो है ना, कल्चर के अकॉर्डिंग लाइफ, it needs both of the sides or all the sides. Positive thinking gave you aeroplane. We will fly. We will fly. Oh, and the negative thinking, somebody came. What if we fell down? What if we are landing in the ocean? What if the engine, it stops? Then that negative thinking gave us parachute, second engine, 4 engines. Now the most of the good planes have 4 engines. एक इंजन बंद, कोई नहीं दूसरा चल रहा है, because somebody had that negative approach. Positive approach, let's sail in the ocean, we'll find some islands. Negative approach, what if the boat sinks? So they have life jackets. तो दुनिया ऐसे चलती है दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष, बट इसके अलावा और बहुत कुछ होता है। So criticism में भी इन्होंने यही किया। All they said that bring out those opinions, bring out those understandings. Let's see if this literature is actually recommended for a society or not. So technically literature is literature. There is nothing good, there is nothing bad. But then if you're given a context and you're asked that which literature can help them to be better, there you can choose that, okay, let's teach them Shakespeare instead of somebody else. So there you can, because then other opinions are involved. Your political opinions are involved, your cultural, moral opinions are involved. अब कोई मुझे बोलेगा छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आई विल से कि ये बुक्स ले लो। बट ओवरऑल लिटरेचर इज लिटरेचर। सो क्रिटिसिज्म में हम ये सब पढ़ेंगे। राइटर कैसा था, राइटर ने ऐसी किताब क्यों लिखी, उसने उस किताब में ऐसा क्या कहा जो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम जाएंगे लिटरेरी थ्योरी पे। थ्योरी में आते कहेंगे कि राइटर को राइटर ही नहीं पता है। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट यूनिट इन लिटरेरी थ्योरी? They'll come and they'll say the text is not by author. Author himself has no idea about the text. Literary theory will deal with these things. Author, text, reader. Writer क्या करता है? Writer किताब लिखता है. Anybody writer from you guys? किसने कुछ लिखा है कभी? नहीं. Messages, WhatsApp text, Facebook post ये तो लिखे है ना? हाँ तो writer तो हो ही ना part time. ये writer ही और क्या है? If you write right, if you convey your emotions, it's okay. Have you felt this thing that what you think, what you write are two different things? Technically, a writer, whatever he wants to write, he is not able to write that thing. There is always a change, a slight change. 100% thought cannot be converted into the writings or executions. No execution possible. Writer can think about the ideas, but the moment he will have the process, he'll have the pen in his hand and to write, and he will go for a vocab,
selection of words, collection of words, arrangement of those words, then organizing those thoughts one by one. Your meaning will be changed, slightly changed, not 100% changed. 100% writing possible nahi hai. Sometimes the author discovers the idea of writing in the process of writing. तो उन्होंने बोला कि author है ही नहीं. Then half of the theory people, they said, and leave the author is dead. किताब को पढ़ो. Or who's your favorite author? Mr. Thomas Hardy. Why so? I love how he writes. So like thoughtful and pessimistic as well. Pessimistic? अरे हाँ, हार्डी बहुत pessimistic है. और भाई great, थॉमस हार्डी फर्स्ट टाइम सुना मैंने किसी का रेफरेंस में. नॉर्मली जेन एयर बहुत बताया लोगों ने. जेन ऑस्टिन बोला है एज अ राइटर. प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत लोगों की फेवरेट बुक है. बताओ, टेल मी योर बुक्स. हु इज योर फेवरेट राइटर? नोबडी? टॉम जॉन्स, जोसेफ एंड्रयूज. फेमस राइटर कौन है? फेवरेट? नहीं, कोई भी फेवरेट नहीं है. Wow, Oscar Wilde is wow. The first author to be imprisoned for homosexuality. Oscar Wilde is next level. Wordsworth is great. Wordsworth अच्छा writer. So if I give you a book, it is written by Wordsworth. Will you be happy or sad? He is your favorite writer. So it depends on the book. I love to read Wordsworth because he just romanticizes everything, his environment, his surroundings. So like there's a depth. Yeah. कि हर एक पेड़ को भी romanticize कर सकते हैं. So, okay, चलो ये बताओ. Suppose you have to buy a book. There are 5 authors in front of you. Will you choose Wordsworth first? If there are 5 books in front of you, will you choose Hardy or Oscar Wilde? Hardy. आपकी भी अगर कोई फेवरेट ऑथर्स हैं और सामने 5 किताबें रखी हैं, आप अपने ऑथर को पहले पिक करोगे? नेचुरल है ना? बट डू यू नो द बुक इनसाइड? This is what we are going to study in theory. Author's name and author's takes are 2 different things. And if you're already inspired, impressed, influenced by the author, you are going for a misreading. थ्योरी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, याद रखना. थ्योरी का सिंपल गोल्डन रूल है. All reading. Yes. All reading is misreading. आप प्रॉपर रीडिंग कर ही नहीं सकते. Whatever you have read till now, whatever you have studied till now is all misreading. Imagine, सोचो. Because most of the readings are done under the influence of the writer's name, writer's aura. जैसे कि बोले जेके रोलिंग ने लिखा, अच्छा बिलियनियर राइटर ने लिखा है, लेट्स बाय इट. बट जेके रोलिंग ने लिखा कि कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बुक अच्छी हो. वेरी चेतन भगत गायब हो गया ना. एक बार बहुत चला था. 5 Point Someone, 3 Mistakes of My Life, 2 States, है ना. हाफ, वही क्या था, हाफ, हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड. और कॉल सेंटर वाला भी था ना कुछ उसका, एन आइडियल कॉल सेंटर, है ना. चेतन भगत 2-3 राइटर थे. अब कहाँ है? अब कहीं नहीं है. There's no guarantee the next book will be hit. But if you're buying the next book because you're under the impression that the writer is great, it means you are already ready, already set for a misreading. अब ऐसा हो सकता है without knowing the writer you buy the book. How many of you are book lovers? I have 400 plus books. मेरी अपनी लाइब्रेरी है और मुझे कहानियों से ज्यादा थ्योरी क्रिटिसिज्म ये पसंद आता है. नाउ आई एम स्टडीइंग फिलॉसफी, तो मुझे फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ काम है. उसके बाद आई गो फॉर होमोसेक्सुअल लिटरेचर. इस बार 2 क्वेश्चन है ना गे लिटरेचर से, तो आई हैव टू बाय सम बुक्स. मैंने लिस्ट बनाई है अभी. I buy the book when I go to a bookstall, I see things, or I already have a plan that I want this particular book. ये चाहिए. How do you buy books? कैसे खरीदते हो आप लोग? You go to a bookstall, eyes closed, and then But is there anybody who has bought a book and you do not know the name of the writer, you do not know the cover page, you just close your eyes and you're like, give me this book. Anybody? So what makes you buy a book? Maybe the title,
अच्छा लग रहा है टाइटल, रातों रात करोड़पति कैसे बने, हाँ ले लेते हैं, ट्रेन में पढ़ेंगे। और अंग्रेजी कैसे बोले 90 दिन में, इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स ऐसे ही बिकती है रेलवे स्टेशन पे। और पोस्टर, गुड, ग्लॉसी पोस्टर्स लगा दो हीरो हीरोइन के, एक पर्टिकुलर क्राउड है जो ले लेगा उस किताब को। कुछ टाइटल डाल दो ऐसे जो टाइटल ही अलग हो। बिलियनर बनने का सीक्रेट, बस एक लिख दो, बिलियनर बनने का सीक्रेट, पीपल विल बाय। नाउ दे डोंट नो व्हाट्स इनसाइड, they have purchased it because they knew about the author, they had preconceived notions, they already had their own understandings, their mindset was ready, their recommendations, teachers recommended book. So all these preconceived ideas about that book are taking you for a wrong reading, galat reading karne ke liye. Real reading when you do not know the book. Real reading, you do not know the title page, cover page, nothing. You just have text, nothing else. Got it? So theory में हम यही बात करेंगे. Who is author? What is text? What are the 4 types of authors? Who is reader? What is implied reader? What are reading practices? ये हम theory में जाएंगे. That's one of the hard portion. Students के बहुत सारे यहाँ पे marks इधर उधर हो जाते हैं. How do you have to get back to the pen drive? This one, like this. I'm still learning. किस में था? मेरा घर वाला बहुत आसान से चल जाता है. I'm so much habitual using that. ये habitual नहीं हूँ मैं इस पे. Okay. Theory on World War II, post World War II. एक theory और बता देता हूँ, post World War II. Beat generation concept, beat theories, existentialism. How this existentialism came to the world? दुनिया को कैसे लगा कि सब फेक है, कोई मतलब नहीं है, लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, इट्स ऑल गॉन. After the Second World War ended with the atom bombs. The atom bomb used on Japan, Hiroshima, Nagasaki. It gave a feeling, a message to the world that there is a superpower and they have these kind of mass destruction weapons. Your life is dependent on their mercy. It's depending. Recently, there was a debate going on. Kim Jong and that American president, the ex-American president, the last one, Donald Trump, they were having some exchange of words. Kim Jong keh raha tha, nuclear button is on my table. Donald Trump said, my nuclear button is bigger than yours. Kim Jong said, because your thumb is small, so your button looks bigger. तुम बटन खेल रहे हो. I am teaching net. Students बेचारे future के लिए आए हुए हैं. What's going on? What's the value of this? What's the value of my knowledge? If there are 2 people who can change the scenario of the world are playing button. हमारे सपने, हमारी plannings, promises, dreams, कुछ नहीं. Then recently again you saw that Biden, Putin, Ukraine war, tension, Third World War. अगर Third World War हुआ तो you know the story rest. उस पे भी literature है, apocalyptic literature. उस पे भी literature आ गया है, zombies की कहानी आएगी. So Putin said this thing: if America and Russia starts fighting, we will be in a different world. So he was right. रशिया अकेला काफी है नाटो के लिए. नाटो के लिए रशिया अकेला काफी है. और जिस दिन सच में ये दोनों फायरिंग शुरू कर देंगे न्यूक्लियर्स की, हम एक अलग दुनिया में होंगे. Then why the hell we are wasting our time in the classroom? All that effort, all those sacrifices, all those sleepless nights to get a JRF, and next day there is a world war. क्या हुआ? अब these are not my words. September 1, 1939, written by W.H. Auden. He says, clever hopes of future expired today. All my clever hopes expired. What to do now? I'm sitting uncertain, afraid. मुझे समझ नहीं आ रहा होगा क्या. So people after the Second World War and the use of atom bomb, the youth actually had this feeling that it's all meaningless.
We are here for a momentary, time, a small time. Lifespan is very small. So just live, just enjoy. And the ultimate truth is to be happy. हमें क्या सिखाया गया है? Control. You want to say something? Control. You want to do something? Control. And how they have controlled you? Two ways of controlling. According to Louis Althusser. Either the power structure controlling. RSA. Repressive state apparatus. Either you are controlled by police, army, law, rules, regulations. That is RSA. Repressive state apparatus. I'll teach you these things. Paper mein aaya hua hai. Or the ISA. Ideological state apparatus. I'll make you write, don't worry. Detail mein padhunga. ISA. Police cannot control everyone. Army cannot control everyone. But religion, morality, ISA, ideological state apparatus, schools, teachers, good things, bad things, heaven, hell. All the God-fearing people are good because they are being watched. वो कहते नहीं यार ऊपर वाला देख रहा है, गलत काम नहीं करना, हमें किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए. There are so many people जो अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं because they are ideologically taught to be good. So they realize that ultimately we have to be happy क्योंकि दुनिया तो controlled है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे. That resulted in Beat generation. The Beatles, Beat, the existential generations. हमें अमेरिका में hippies आ गए थे. 1960s, 70s का जो अमेरिका है ना, drugs, homosexuality and this existentialism बहुत hippies level पे आ गया था, बहुत top level पे आ गया था. The Doors, Nirvana's, ये music CDs बिक रही थी. बॉब डायलन, सॉरी क्या नाम उसका वर्ड, Who is that guy जिसका 6 फरवरी को बर्थडे है? बॉब मार्ले. बॉब मार्ले टॉपिक है लिटरेचर में. यस, बॉब मार्ले भी टॉपिक है, बॉब डायलन भी है. बॉब डायलन हैज वॉन नोबेल अवार्ड ऑफ लिटरेचर. डू यू नो दैट? बॉब डायलन को नोबेल अवार्ड मिला हुआ है. म्यूजिशियन. जिम मॉरिसन जिसको कॉपी किया रॉकस्टार वाला. एक अभी लिटरेचर में ये भी आता है, जैज एज. जैज एज में आएगा. बीट जनरेशन ऑथर्स आएंगे. एक राइटर था, ही यूज्ड टू प्रमोट सिगार. वो कहता था जिंदगी बेकार अगर जिंदगी में सिगार नहीं पीता. आई एम नॉट रिकमेंडिंग, ओके, यहाँ पे आना चाहिए नोटिस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. Sigmund Freud used to believe in this thing that cigar is the gift of God. When his nephew turned 18, he gifted a cigar to his nephew and said, "This is the best ever gift to you. It's the best thing in life." That nephew turned it down. He said, "Nahi, uncle, no." He said, "My son, you'll regret it. You just said no to the best thing ever." उसके डॉक्टर्स को मना किया मत पी. Still he was doing that. When he was almost on his deathbed, he called his younger brother and gifted him a great stock of his own cigars. अब वो म्यूजियम में रखी हुई हैं. तो ये वाला लिटरेचर आएगा इस माइंडसेट के साथ. Then comes the other concepts. The last one, right? खत्म ही हो गया. Research method and materials in English. Primarily research classes आपको paper 1 की मिलेंगी. उसमें I'll just come with some references of English literature book, एमिनेंट फॉर्मेट 9, एमिनेंट फॉर्मेट 10. दोनों आपको करवाए जाएंगे. प्राइमरीली 9 करवाएंगे, 10 अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट वी विल राइट दोज थिंग्स. इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है. पेपर 1 रिसर्च विल बी सेम. दे जस्ट एडेड इट सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर एमफिल, पीएचडी, दे शुड हैव सम आइडिया. सो उसमें बिब्लियोग्राफी क्या होती है, की नोट्स, फुट नोट्स, दैट आई विल टीच यू. दैट विल बी योर सिलेबस. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रिटिश क्रोनोलॉजी. कल आपको क्रोनोलॉजी कंप्लीट करवाऊंगा विद ऑल द डेट्स. वॉट एवर द डेट्स आई विल मेंशन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एंड मग अप दोज थिंग्स ओनली. अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतना याद करना है. मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद एंग्लो सेक्शंस. शुरू हो जाएगा क्योंकि अब टाइम नहीं है. अब मंडे से फुल स्पीड क्लास स्टार्ट हो जाएगी. मंडे से होमवर्क शुरू हो जाएंगे, ठीक है. एंड आई ऑल्सो टेक माई क्लास इन दिस, मे बी सेकेंड क्लास. फर्स्ट नहीं, सेकेंड क्लास कर लेंगे. सो सेकेंड एंड थर्ड इट विल बी माई क्लास. Any questions? बताओ, any questions?